Hmm. So friends, so today class, hello friend. Some software engineering start software and mobile computer software and mobile engineering. So the many years. So some definitions for you. And start some Android and .NET basics today. So I write. I'm set tonight. So yesterday I write go and make documents. So today in the morning I write it. So fine. I softwares key types. System softwares like Mac and Mac. OS होते हैं utility softwares disk management वगैरह application software like उनके सब words etc. अच्छा the difference अच्छा software engineering what is the software engineering अच्छा also some उर्दू तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक लाइनक्स एंड हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से जेक्स मैनेजमेंट है क्लीनअप के एप्स वगैरह ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यही हो गया जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वगैरह वगैरह तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइन अ प्रोसेस एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट and then design build testing software application which will testify and those requirements अच्छा analyze analyzing computer software engineering is the branch of the computer science include the development build computer system software and application softwares हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं बिल्ड अच्छे करते हैं एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इंजीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर का काम वर्क इंस्टॉल करना मेंटेन करना एप्लीकेशन को डिज़ाइन बिल्ड प्रोग्राम यूज़र की नीड्स के हिसाब से सिस्टम इंजीनियर का काम सिस्टम को मेंटेन रखना ग्रोथ बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यू नो माइक्रोसॉफ्ट लाइक Microsoft System Certified Engineer, the course Microsoft System Certified Engineer, Microsoft System Certified Engineer MCSC, MCS, MCSC, MCSC, C, C, and Cisco also give this. So network maintain रखना Cisco. So if you also some teach if you want but little basics so मैं अच्छा सो नेटवर्क को मेंटेन रखना कंप्यूटर को मेंटेन रखना कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट्स के अंदर सिस्टम इंजीनियर का वर्क है अच्छा आप ये एप्लीकेशन और सॉफ्ट और उसका समझे तो आगे ये क्लास आगे हैं अब एंड्रॉइड अच्छा इसमें .NET कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के ओएस मेनली हैं सिस्टम कंप्यूटर क्या हो गया हाँ कंप्यूटर ओएस मेन लाइक विंडो is the Linux many Windows is given from by Microsoft to you know that the well known and Mac by Apple, Window by Microsoft and Mac
by Apple. Linux Unix के many distributors हैं. Many Unix Linux Unix also teach to more detail in if you want. और अच्छा Android now some Android application and Apple develop company. So well, Steve Jobs is the great Steve Jobs. So and Microsoft honor everybody know Bill Gates and Steve Jobs all Mac. So this is Android by Google. Um, uh, by Google, Google, Google first came search engine after introduced those disclosed right in 2007. It's 2007. So and the first commercial device 2008. The Android the type of sure. Android 6 सितंबर 2008 में एंड्रॉइड कोड नेम्स थे एंड्रॉइड कोड नेम नंबर वन नंबर वन कोडी कोड कुड्डी कुड्डी अच्छा अब किट के अच्छा मतलब कब के डॉट नेट डिक्लेयर के जो आई थी लैंड अच्छा एंड्रॉइड की एप्स के टाइप ऑफ एंड्रॉइड एप्स नेटिव ऐप हाइब्रिड वेब ऐप नेटिव ऐप okay so native app hybrid अच्छा नेटिव ऐप अच्छा अच्छा स्मार्ट नेटिव ऐप जो होती है वो स्मार्ट नेटिव ऐप जो होती है यानी सच उसी प्रोग्रामिंग जैसे स्पेसिफाइज लैंग्वेजेस में चली है ऑब्जेक्टिव सी के एंड स्विफ्ट वगैरह आईओएस में एंड जावा फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए जावा प्रोग्रामिंग नेटिव ऐप और डिस्क्राइब जावा यानी जावा कोटलाइन फॉर एंड्रॉइड हो गया ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट फॉर आईओएस दिस इज ओके सो नेटिव ऐप जावा कोटलाइन which अच्छा जो native app for Android
हो गया। ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी। सी और स्विफ्टी, स्विफ्ट्स फॉर iOS। ओके, तो अच्छा, हाइब्रिड ऐप, hybrid hybrid is uh, also using technology, web technologies like JavaScript हो गए, HTML हो गए, CSS वगैरह को बना से यूज की प्रॉपर्टी से यूज करके करेंगे तो वो हाइब्रिड ऐप होगी। ओके, यानी वेब को चलाएंगे उसके अंदर तो वो हाइब्रिड ऐप होगी। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस रेदर। इसकी अगर हम इसके अलावा यानी इनकी जो स्पेसिफाई लैंग्वेजेस हैं यानी ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट वगैरह और ये जावा, इसके अलावा हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो ये हाइब्रिड है। दैट्स हाइब्रिड। तो इसमें ओपन ओपन वेब वेब्स टेक वेब टेक्नोलॉजीज जो होती है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी की जिसमें एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट हो गया, सी एस एस हो गया, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट सी एस एस। अच्छा, अच्छा, तो इसके बाद आता है वेब ऐप। वेब ऐप क्या है? व्हाट इज द वेब ऐप? तो वेब ऐप वो है वेब ऐप जो होस्ट होगी ब्राउजर में, यानी होस्ट इन द वेब ब्राउजर, होस्ट ऑन वेब ब्राउजर्स इन एंड जो उसकी जो व्यूज इन वेब व्यूज कैसे उसको होगा, वेब यानी वेब के जो व्यू होगा उससे हम उसको वेब व्यू जो होता है ना एंड्रॉइड में उससे देखेंगे। सो ये नहीं, यह भी समझ में आ गया। तो essential websites that look like an essentially वेबसाइट दूंगी उसको इंटरसेक्ट करेंगे वेब व्यू यानी इंटरेक्ट विद जो होगा थ्रू वेब व्यू। सो अच्छा, ओके, यानी होस्ट ऑन वेब ब्राउजर, होस्ट on web browser search and so class already लंबी लंबी। so डॉट नेट के सब आते हैं तो फुल के लिए डेफिनेशंस राइट एंड फॉर यू आफ्टर। सो अच्छा, नेक्स्ट द डॉट नेट। So .NET already right. So what is the .NET? .NET is a Microsoft Windows. You know that. So install Microsoft Windows. Maybe I other version is also making, but app make for also Linux for Mac.
So it's a Visual Studio. So and very popular, widely used professional languages and best, because I love that. And very thanks to maker, developer, engineer, Microsoft, to make the great language. So अच्छा, मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, easy to learn structured languages. So understand, easy to learn. अच्छा, this programming features Boolean automatic standard libraries, indexing, easy to simple mathematics, multi-threading, simple. So overall great languages. And अच्छा part इसके जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क पे ऑपरेट होती है. So features, that's the boolean है. And tasking solutions, and the making from my core notes, and more from नीचे. अच्छा, .NET used in web application, Windows application like Vacarpet.net. Many softwares are developed. Many engineers are used. Web services builds, web applications build on the framework. Multi-platform application. The framework has design such as a it can following it can be used from any of the following languages like Visual Basic to use C, C Sharp, JS, Cobbles, etc. So overall, that was great languages. And the component of the .NET frameworks: common language runtime, .NET framework class library, common language, common system, metadata and assembling, window forms के अंदर होता है URDU.net, विंडो लिंक्स, विंडो जो कंपोनेंट्स होते हैं .NET फ्रेमवर्क के. सो विंडो फॉर्म होता है ASP.NET एजेक्स वगैरह .NET. So or also you can from ASP.NET site checks. So more information and other next tutorial and comments, so I guide you more. And my websites some page build to more, right. अच्छा, name, VB.NET programming structure, अच्छा, class and the models. Now VB.NET basically consists of the following parts: the namespace and declaration, the class or model. Class के अंदर लेते हैं, model is one more जब variable, more एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स होंगे उसके अंदर, वन और मोर प्रोसीजर्स. क्या क्या करना है हमें, द वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, द मेन प्रोसीजर क्या है, उसका स्टेटमेंट एक्सप्रेशन वगैरह क्या होंगी, इसके कमेंट्स वगैरह देंगे. इसको जब हम करते हैं, मैं आपको जैसे अब उसको हम कमेंट्स वगैरह देते हैं तो उसके रीजन वगैरह भी करते हैं डिफाइन. सो उसको जोडिंग कोड्स वगैरह अभी आपको बताते हैं. सो हेलो वर्ड एग्जाम्पल में एक और नीचे में एक. सो फॉरगेट टू राइट here. So so next 5 by 5 look simple code that print word hello. So imports हो गया. फर्स्ट प्रोग्राम imports को करना है. import system, import system, import system. I think code expression is better to in the when Visual Studio is installed and real. So some
after. So some other examples, the definition I write, so from my books, so I don't to give you first class, so it's better to understand the basics after court, I think. So is better. Next, hmm, so function sub procedure could we have define behavior of the class. So function sub operators, after in the start the language is more you guide easily in the different type of functions procedures होते हैं. So one or more procedure, the procedure contain execute codes, or in other words the defined behaviors of the class, the functions, sub functions, handlers वगैरह का क्या करते हैं, remove handlers, मतलब different, so complier, and next thing ये secure VB.NET प्रोग्राम नहीं VB.NET प्रोग्राम का जो व्यू है, फर्स्ट व्यू, सो अच्छा होगा. So execute, compile, make, start, 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 compile, and execute VB.programs. So more picture, I think, get and snaps through and heading more documents. All set, start Visual Studio, menu bar, choose new project, choose templates, console application. So console application, here is a file, so menu here. So there are new projects, so you can here, but after install is much better to on the next classes install and make apps for you and guide it. So this is the startup class and the guide. अच्छा डेटा टाइप्स वगैरह इसके अंदर हैं. तो हाउ डू वी डॉट नेट की जो है डेटा टाइप है बूलियंस, स्टोरेज एलोकेशंस है, जो है इसमें बूलियन है, बिट्स शेयर शेयर 1 बाइट लेता है इसकी स्टोरेज के एलोकेशंस के अंदर, बूलियन ट्रू, इसकी जो वैल्यू रेंज ट्रू या फॉल्स होगा. बूलियन जो डबल 8 बिट्स लेती है, डिसिमल 16 बिट्स टेक, डेट 8 बिट्स टेक, इसकी फंक्शन ऐसे होती है, ऐसे आएगी. यदि चेयर जो है 0 थ्रू डिफाइन होगा, इंटीजर है वो इंटीजर इस तरीके से होंगे, साइन होंगे. इसकी जो है एलोकेशन 8 बिट्स है, बिट्स है. ऑब्जेक्ट्स अच्छा 32 बिट्स होगा. एंड स्ट्रिंग होगी और अच्छा द फॉलोइंग एग्जांपल. So explain more if you ask. So this is the basics of languages to इसका the following example demonstrate use of some models. Okay, so dim b is a byte, dim e is integer, d is an integer. So here is the some basic simple program in a console write line. So more program make then the provide the following in line type conversion functions. So conversion functions, C convert the expression to the boolean date type.
ये जो होता है सीबल्स एक्सप्रेशंस जो है वो बूलियन में कन्वर्ट कर देगी, बिट्स एंड चार में, डबल में, डिसिबल, इंटीजर, लॉन्ग, चेक, शॉर्ट में. सो इसके एग्जांपल इन द मॉडल डेट टाइप्स के अंदर इसकी एग्जांपल है कॉन्सल, राइट लाइन कॉन्सल शो कर देगा. सो this is the basics and more guide web and understand the .NET some basics and other deeply guide .NET if you want. So and mobile application, native app, web app, and hybrid apps. Also LG type of app applications web you want to learn graphics to 3D. Also Microsoft Office too. Guide for you my apps and my softwares and other internet softwares want to learn. So I guide for you Office app, but Office 3D apps, Office Adobe apps, Adobe suites, full Adobe Photoshop, Illustrator, InDesigns, Adobe Flash, मतलब फ्लैश का नेम अगर चेंज हो गया है तो न्यू नेम एडोबी फ्लैश का जो है वो एडोबी फ्लैश एडोबी एनिमेटर. सो एडोबी एनिमेटर फ्लैश इंडिया हो गया एडोबी ड्रीम वीवर. So she is a 3D next my some so many apps I want to if you want to learn and .NET and write. So want to learn or work so I do both for you and engineering some also medical little very far times. So basics of the medic skills for making some good video for the students and accounts, fully accounts apps, anything in account, computerized accounting, and also my app. So I teach you. So this is the basics and this is very basics. If you don't understand so the don't mind ask me and other classes you watch it .NET key write for you some mistakes, so sorry and the if any mistakes, so sorry. So otherwise is good tutorial. So hope you learn the basics of the .NET engineering in the window mobile and mobiles, and also you want to system engineering. So I teach you system engineering as well as the Linux, so Windows Server, networks. So love to learn and love to teach. Both is a great to love all humans and use my card app .NET/card friend FRIEND setu.com. Any type of web application want JavaScript, CSS, PHP, CC are also helpful for web developer. So also the web developer contact me. So I teach you what CC and you love to learn and easy way to some thing or more string for you. So other thing I'm making with join if you want to learn with me, join with me and great thing with make from make apps. So love all and unitepark.net is the current web address.
unitebook.net. So enjoy my video and of learning. So and also give more tutorial videos. If you want to learn the, please like it and comments, because your comments uh, give me more free videos and full guides to you, and plus certificates I give you with the test. Make like any company make international standards के full MCQs type international standards make. Then you give the papers and also contact your any standards for testing your papering examinations. So hope your widely accepted these certificates. Hope for your great futures, and hope uh, for the humanities, for the good and love for all humans. Bye.